तो जनाब हमारे पास पेपर 2 है अक्टूबर नवंबर 2021 वेरिएंस 22 सही है। So October November 2021 variance 22 हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। कंटेन अ कैटायन विद चार्ज ऑफ 2+, तो 2+ चार्ज जो है वो कोबाल्ट के ऊपर होता है, इसलिए कोबाल्ट टू क्लोराइड वुड बी द राइट आंसर। रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आयरन 3 आयंस के होते हैं, which is why iron 3 chloride is the right answer. Is insoluble in water, तो silver chloride is insoluble in water, हमने यहाँ पर silver chloride लिखा। उसके बाद reacts with sodium hydroxide when warmed to produce a gas which turns damp red atmosphere blue। इसका मतलब अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, तो अगर अमोनिया गैस रिलीज हो रही है तो इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड होगा, because any ammonium salt react with any alkali, always ammonia gas is given off when added to water, can form an aqueous solution with a pH value 1। pH 1 है तो इसका मतलब strong acidic solution है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड would be the right answer, because जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा it will turn to hydrochloric acid। Clear? Now the next is, this question is about pollutant gases. Hydrocarbons such as octane are used as fuel for cars. The list shows the gases present in car exhaust. State which two gases in the list show that incomplete combustion has taken place in this car engine। बेटा एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से मिल रही है ना, और दूसरा है बेटा ऑक्टेन, क्योंकि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स भी तो होते हैं ना एटमॉस्फेयर में। Describe a test for carbon dioxide, pass the gas to lime water। Observation, lime water turns milky। Two natural sources of methane in the atmosphere are from leaks of natural gas and waste gases from animals। Give one natural source of methane in the atmosphere। तो बेटा greenhouse, atmosphere में one natural source of vegetation या decomposition of plant, complete this sentence about the effect of an increase in the concentration of methane in the atmosphere। Methane is a greenhouse gas because it absorbs and then re-emits infrared radiation। This contributes to an increase in the temperature of the atmosphere, which is called greenhouse effect for global warming। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए आप greenhouse और यहाँ लिख दीजिए global warming। ठीक है बेटे। Cars are fitted with catalytic converters to reduce the amount of harmful pollutants gases from car exhaust। Describe how catalytic converter remove pollutant gases from car exhaust। 3 marks का पार्ट है, तो आप बताइए। नाइट्रोजन ऑक्साइड and carbon monoxide are reacting together, converting into nitrogen and carbon dioxide। ठीक है, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन gives you carbon dioxide। These reaction takes place
takes place in catalytic converter at high temperature using platinum and rhodium catalyst. ठीक है ना बेटे? Question 3. Magnesium ribbon reacts with dilute hydrochloric acid according to the following equation. The graph shows the volume of hydrogen gas produced at 20 degrees Celsius. Hydrogen gas, the volume produced at 20 degrees Celsius as the reaction proceeds. The magnesium ribbon is in excess. Magnesium ribbon जो है वो excess मान लेते हैं, ठीक है? Examiner ने हमें ये graph दे दिया. The experiment is repeated using a lower concentration of hydrochloric acid. The volume of acid used and all the other conditions are the same. Draw a line on the grid to show how the volume of hydrogen gas produced changes with time when the reaction is done with the lower concentration of hydrochloric acid. जी क्या करेंगे? आपको पता है ना? नहीं बेटा, इनिशियल रेट डिटरमाइन करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ से. आ रही है बात समझ? तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन एट लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है? और ये बेटा लेवल ऑफ हो रहा है 45 टू समथिंग. ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना आ रहा है बेटा यहाँ से 45 cm3 और ये स्टीपर कर्व है, इनिशियल रेट ज्यादा है. Describe and explain using ideas about collisions between particles how the rate of reaction changes when magnesium powder is used instead of magnesium ribbon. All other conditions are the same. तो अगर मैं मैग्नीशियम पाउडर यूज करूंगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा. हम यहाँ पर लिखेंगे as surface area increases, number of reacting particles increases, if number of reacting particles increases, collision frequency increases, and so rate of reaction increases. ठीक है? Describe and explain using ideas about collisions between particles. Important one. How the rate of reaction changes when temperature of the reaction mixture is decreased. All of the conditions are the same. आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर कम करते हैं काइनेटिक एनर्जी कम होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है. As temperature decreases, kinetic energy decreases, collision frequency decreases,
So pure molecules have energy greater than activation energy. Thus, rate of reaction decreases. Calculate the maximum volume in dm cube of hydrogen formed when 1.68 gram of magnesium reacts with excess hydrochloric acid at room temperature and pressure. 3 significant figures में आंसर देना है. तो बेटा सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कैलकुलेट करेंगे. 1.68 को डिवाइड कर दीजिए बेटा 24 से, तो आपके पास मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.07 मोल्स. ठीक है. जो मोल्स मैग्नीशियम के हैं वही मोल्स हाइड्रोजन के भी होंगे, बिकॉज 1:1 का रेशियो है बेटा. ये अगर 0.07 मोल है तो ये भी कितने होंगे? 0.07 मोल. ठीक है. आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो 1 मोल किसकी इक्वल होता है? 24 dm³ वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर प्रेशर. इफ यू हैव 0.07 मोल, बताइए वॉल्यूम कितना होगा? 1.68 dm³. 1.68 dm³. Magnesium is a good reducing agent. Describe a test for reducing agent. Reducing agent को टेस्ट करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, और हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं, KMnO4 भी यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पर लिखूंगा पोटेशियम मैग्नेट 7, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर होता है इसलिए यूज कर रहा हूँ. पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 वीकर होता है. ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जाहिर सी बात है पोटेशियम मैग्नेट 7 का पर्पल कलर होता है, वो डिक्लोराइज हो जाएगा, यानी पर्पल टू कलरलेस. जी, पोटेशियम मैग्नेट स्ट्रॉन्गर. नेक्स्ट, alkenes are a homologous series of hydrocarbons. The boiling and melting point and density of alkene increases as the number of carbon atom increases. Give one other physical property of alkene which increases as the number of carbon atom increases. Viscosity. Give two other characteristics. और ये भी मैंने लिखवाया आपको कि viscosity increase होती है. Physical properties of alkene में check कीजिए. इसके बाद give two other characteristics of a homologous series. Same functional group, same general formula, same chemical property. ठीक है बेटे. Two typical reactions of alkenes are combustion and cracking. State the name of another typical chemical reaction of alkene and the reactants needed to react with this alkene. तो बेटा एक तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्रैकिंग. दूसरा क्या बता रहा है वो? कंबशन. और तीसरा हमने क्या बताया था आपको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. याद है? क्लोरीन के साथ था, और हमने उसके लिए रिएक्टेंट क्या यूज किए थे? मीथेन गैस एंड क्लोरीन गैस. Alkenes are produced by cracking alkene. State two conditions needed for cracking. भाई क्रैकिंग के लिए आपको दो कंडीशंस चाहिए. एक चाहिए आपको हाई टेम्परेचर, और दूसरा चाहिए आपको कैटलिस्ट. याद है कौन सा लिखा है मैंने कैटलिस्ट? जी, उसका नाम क्या दिया था?
जियोलाइट्स, एल्यूमिनोसिलिकेट भी कहते हैं, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ कैटलिस्ट भी लिख देंगे ना तो मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने थोड़ा सा डिटेल से बता दिया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ये हमने थ्योरी में तो यही पढ़ा था ना बेटे। आप इन दोनों का मिक्सचर लिख दो, ये इसकी जगह पे कैटलिस्ट लिख दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। Tridecane can be cracked to produce an alkene with 4 carbon atoms. ये important बात है, एक alkene बनी है 4 carbon atoms की and one other hydrocarbon only. Construct an equation for this reaction. तो बेटा आपके पास C13H24 है G28 और ये बन रहा है 4 carbon atom की alkene which is C4H8. What's left now? 9 and 20. मैंने कहा था कोई भी फ्रैगमेंट बनाओ, मेक श्योर के कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन कंटेन 88.9% कार्बन। बेटा सबसे पहले तो मुझे बताइए कि 100 माइनस 88.9 करूंगा तो मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगी विच इज 11.1%। तो मुझे कार्बन है 88.9, मुझे हाइड्रोजन मिला हुआ है 11.1। इसको डिवाइड करो 1 से तो 11.1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो 12 से तो ये कितना आएगा 7.408। तो आप क्या करो 7.4 से दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1.5। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया C2H3। Okay, next question. Lithium reacts with aqueous sodium iodide. Lithium जब zinc iodide जब lithium zinc iodide से reaction करेगा, lithium iodide और zinc form करेगा। Explain by referring to the equation why reaction involves both oxidation and reduction. बेटा lithium 0 है, यहाँ पर +1 हो गया, इसका मतलब lithium जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर zinc 2+ है और यहाँ पर जिंक 0 है, इसका मतलब जिंक जो है वो रिड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो आप यहाँ बताएंगे lithium is oxidized to lithium ion by losing electron zinc ion is converted into zinc by gaining electron which is why reaction involves both oxidation and reduction. Acidified aqueous silver nitrate is added to aqueous zinc iodide. State the observation you made. आप जानते हैं कि जब सिल्वर आयंस आयोडाइड आयंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो येलो पीपीटी बनते हैं। When aqueous bromine reacts with zinc iodide, a brown solution is formed. Name the product of the solution. आप जानते हैं कि
ब्रोमीन जो है उसकी रिएक्टिविटी आयोडाइड से ज्यादा है, तो जब वो आयोडाइड को डिस्प्लेस करेगा तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन में। इस आयोडीन का ब्राउन सॉल्यूशन होगा। तो एक तो होगा जिंक ब्रोमाइड और दूसरा क्या होगा, आयोडीन। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है बेटा यहाँ पे, ZnI2 plus Br2 ZnBr2 plus I2. Explain why aqueous bromine does not react with aqueous zinc chloride, because bromine की reactivity chlorine से कम होती है, because bromine is less reactive than chlorine. सही। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन, phosphorus reacts with hydrogen to produce phosphine. This reaction is endothermic. That's an important statement. Complete the energy profile diagram for this reaction. Label reactants, products, and delta H. Okay. तो सबसे पहला काम, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये आपके रिएक्टेंट्स, ये आपके प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में 2p plus 3H2 और प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, 2PH3। सही है, ये हो जाएगा आपके पास एनर्जी बैरियर। और एंथैल्पी चेंज के लिए हम अपवर्ड एरो यूज करेंगे। राइट, कोई इशू तो नहीं है, मसला तो नहीं है। उसने एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पूछी इसलिए हम नहीं बता रहे, बट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग व्हाई द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो आप बोले बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो and bond forming is formation is exothermic. During the reaction, more energy is absorbed than released. So reaction is endothermic. See, phosphine reacts with oxygen to form phosphorus 5 oxide and water. Complete the equation for this reaction. ठीक है, तो यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 6 4 12, तो यहाँ 6 कर दीजिए, यहाँ 16 हो गया, तो यहाँ 8 कर दीजिए। सही है। इसके बाद that the next question is, sodium is a metal in group 1 of the periodic table. Diamond, which is your carbon, is a non-metal which is a good conductor of heat. Okay. State 2 differences in the physical properties of sodium and diamond. Beta, sodium conducts electricity or sodium has low melting boiling point. Sodium has a good electrical conductivity.
सही। और क्या हो सकता है? आप ये भी कह सकते हैं कि सोडियम जो होता है वो नाइट से कट जाता है, ऐसे ही ना, तो सोडियम सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है, ये भी तो कह सकते हो। एक ही बात है ना, डिफरेंस पूछ रहा है बेटा। तो अगर मैंने सोडियम का लिखा है इसमें मतलब इट डजंट वर्क इन डायमंड, ठीक है। एन आयन ऑफ सोडियम हैज अ सिंबल, ये आ गया सिंबल। Reduce the number of protons, neutrons and electrons in this ion. अगर प्रोटॉन नंबर 11 है तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन्स 11 होने चाहिए थे, प्लस चार्ज की वजह से 10 हो जाएंगे। 23 minus 11 becomes 12 neutrons. Sodium reacts with nitrogen to form sodium nitrite. Complete the equation for this reaction. आ जाएगा 6, ठीक है। When carbon is heated, the steam in a closed container, an equilibrium mixture is formed. The forward reaction is endothermic. Guys, this is going to be the important statement. Describe and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when temperature is increased. किसी भी endothermic reaction में जब हम temperature को increase करते हैं, then according to Lee-Schuster's principle, equilibrium always favors towards right hand side. Equilibrium always favors towards right hand side. कोई इशू तो नहीं है, हम इसको तो तमीज से लिख देते हैं। Exactly वही वर्डिंग्स लिखनी है जो कि आपको लिखना ही नहीं है, हम लिख देते हैं। Increasing temperature causes stress in equilibrium. Causes the stress in equilibrium. To minimize this stress, equilibrium favors towards right hand side because forward reaction is endothermic. Because forward reaction is endothermic. Next, describe and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when pressure is decreased. वापस चलते हैं इस रिएक्शन के ऊपर। आप नोट करें यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हैं आपके पास? 1, क्योंकि ये सॉलिड है इसको मैंने इग्नोर कर देना है। यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हैं? 2। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। उसने कहा है हमसे कि प्रेशर को डिक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। हम यहाँ लिख देते हैं। Decrease in pressure causes stress in equilibrium to minimize this stress. Equilibrium favors towards right hand side because of more number of gaseous molecules. ठीक है?
Next, the structure of an organic compound T is shown. इसमें alcohol भी है functional group और इसमें alkene भी है functional group, right? दो different functional groups हैं. इसमें एक alkene है और दूसरा कौन सा है? Alcohol, right? Reduce the molecular formula of compound T. How many carbon atoms? 1, 2, 3 carbon atoms. How many hydrogen atoms? 2, 3, 4, 5, 6. And how many oxygen atoms? 1. Compound T is a colorless liquid. State the color change when excess compound T is added to aqueous body from red brown to colorless. क्योंकि एल्कीन जो है ना उसको डीकलराइज कर देगा aqueous body को. Compound T can be oxidized to carboxylic acid. State a suitable oxidizing agent for this. KMnO4 in the presence of acidic medium. Compound T can be polymerized. Draw the partial structure of a polymer of compound T. Show 2 repeating units. So बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने क्या करना है, इस एल्कीन को as it is कॉपी करना है और इसके जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ ग्रुप उनको वर्टिकली अरेंज करना है, राइट? तो CH2 CH2OH हो गया. ये CH2, this is CH2OH H. ये मेरा पहला रिपीटिंग यूनिट आ गया. एग्जैक्टली दूसरा भी इसी तरह से बनेगा, सेम बिल्कुल. ठीक है जी. तो एक रिपीटिंग यूनिट मैंने ये मेंशन किया और सेकंड रिपीटिंग यूनिट मैंने ये मेंशन कर दिया. Compound T reacts with methanoic acid to form an ester. Complete the structure of this ester to show all the bonds and all the atoms. Okay. आप जानते हैं कि ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा. एग्जामिनर ने बाकी सारे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब हमें अटैच करना है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा? CO. CO के बाद क्या है? H. क्योंकि मेथनोइक एसिड का ये फॉर्मूला है, मुझे इस मेथनोइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्शन करवाना है. तो होगा क्या? यहां से OH रिमूव हो रहा होगा और यहां से क्या रिमूव हो रहा होगा? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा यहां से. जब भी तो मिलकर एस्टर बना रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट है ना एस्टर का, और कोई भी नहीं. ओके, आगे चलते हैं. पार्ट है methanoic acid is a weak acid, hydrochloric acid is a strong acid. Give the formula of the positive ions that is present in all acid. The hydrogen ions. ठीक है. सही है ना? सारे एसिड में H का साइन. Explain why the rate of reaction of 1 mole per dm to methanoic acid with magnesium is less than that of rate of reaction of 1 mole per dm to hydrochloric acid with magnesium. Methanoic acid is a weak acid. It partly ionizes in aqueous medium, which is why reaction with magnesium is slow. HCl is a stronger acid. It fully ionizes in aqueous medium, so reaction with magnesium is faster. Clear? So लिख दो फटाफट फिर जल्दी से. Methanoic acid is weaker. It ionizes partially. While HCl is stronger and ionizes
ठीक है। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैथेनिक एसिड विद मैग्नीशियम, ये हमने पहले भी किया है, पहले भी इक्वेशन एग्जाम में पूछी है प्रीवियस ईयर्स में, आज फिर कर देते हैं। ये बनेगा मैग्नीशियम मेथनोएट में प्लस हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो बताया ना इसका, क्या है कॉन्सेप्ट? भाई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपको कुछ भी याद ना है तो आप ये देख लीजिए कि इसमें से एनाइन कौन सा होगा, मेथनोएट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम आयंस। जाहिर बात है इस पे -1 चार्ज, इस पे 2+ चार्ज, दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा। और जब ये बनेगा तो जाहिर सी बात है इसमें यहाँ पर टेकिंग 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ भी 2 चाहिए, तो हाइड्रोजन भी 2 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? कॉन्सेप्ट को आप कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो फॉर ऑल द केसेस, नॉट फॉर दिस, फॉर ऑल द केसेस। Question number 9. This question is about sulfuric acid and sulfates. Sulfur is one of the raw material used in the contact process to make sulfuric acid. Name 2 other raw material used to make sulfuric acid. हमने raw material पहले भी बताया था आपको। पहला raw material क्या था? Water, क्योंकि वो waste gases को wash करने में काम आता है। और दूसरा भाई सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए होती है, इसके लिए यू नीड एयर, आई मीन टू से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, एयर से। नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कांटेक्ट प्रोसेस, वेनेडियम 5 ऑक्साइड। The electrolysis of dilute sulfuric acid using inert electrode produces oxygen at the anode. Define the term electrolysis. Decomposition of a compound, ये हमने मंडे को पेपर किया तो उससे भी आया है। Decomposition of compound into its ions by the passage of direct current. Construct the equation for the reaction taking place at the cathode. So अगर oxygen gas is given off at anode, then obviously hydrogen gas is given off at cathode. तो अगर hydrogen gas is given off at cathode and cathode at reduction takes place, so hydrogen ion will gain an electron and convert it to hydrogen atom. Hydrogen always exists in diatomic state, तो मैं यहाँ भी 2 लगाऊंगा, तो मैं यहाँ भी 2 लगाऊंगा, ठीक है। Dilute sulfuric acid reacts with sodium hydroxide. A student adds 0.76 gram of solid sodium hydroxide to 45 cm³ of 0.2 mole per dm sulfuric acid. Show by calculation that sodium hydroxide is in excess. अच्छा जी, moles of NaOH कितने हैं? 0.76 divided by 40. 40 is the MR of NaOH, जो कि आपने खुद से कैलकुलेट कर, ठीक है। बताइए मोल्स कितने आ रहे हैं? Moles of H2SO4 1000 cm³ में आपके पास कितने मोल्स हैं? 0.20। आपके पास वॉल्यूम कितना है? 45 cm³। बताइए मोल्स कितने हो जाएंगे? 9 into 10 to the power minus 3 moles. Obviously, sodium hydroxide excess में है क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है as compared to moles of H2SO4. तो आप लिख लीजिए moles of NaOH is greater than that of
मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सही है। Aqueous sodium hydroxide is formed with ammonium sulfate. Obviously, ammonium ion की वजह से अमोनिया गैस रिलीज होगी, which turns them red into paper blue. यहाँ तक तो मुझे पता चल गया। State the name of the three products formed in this reaction. Okay, हम एक काम करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। अमोनियम सल्फेट ये है आपके पास, and I believe शायद मैंने इस पैटर्न की कोई इक्वेशन बना के दी है आपको नोट्स में। ऐसा मुझे लगता है, कंफर्म हूं मैं इस बात के लिए। तो सोडियम और सल्फेट मिलकर क्या बना लेंगे? सोडियम सल्फेट, वाटर बनेगा एंड अमोनिया गैस बनेगी। तो आप लिखिए सोडियम सल्फेट, वाटर, अमोनिया, ठीक है। Next, this question is about elements in group 5 of the periodic table. The table shows some properties of the group 5 elements. Okay, तो आपके पास densities given है और आपके पास melting points given है। Predict the density of antimony. तो बेटा इससे ज्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक रेंज लिख दीजिए। तो आप बेटा यहाँ लिख दीजिए 6.5, 7 लिखते हैं, 7.5 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 8.5 लिखते हैं, 8.9 लिखते हैं, 9 लिख दीजिए, 9.5 लिख दें, कोई इशू नहीं है। यू कैन प्रेडिक्ट एनी वैल्यू, बिकॉज़ प्रेडिक्ट करने के लिए कह रहा है ना, ज्यादा दिखानी है आपने वैल्यू, रेंज में दिखानी है। Suggest why it is difficult to predict the melting point of arsenic. There is no trend. The structure of the two compounds of phosphorus R and S are shown. Okay, explain in terms of structure and bonding. That's a very important point. Structure and bonding. Compound R has a high melting point क्योंकि उसमें ionic bonding है, उसमें giant structure होगा, उसमें strong electrostatic attraction होगी। उस attraction को overcome करने के लिए we need less amount of energy, I mean more amount of energy, which is why it has high melting and boiling point, right? तो पहले compound R, it's with ionic bonding, has giant ionic lattice, ठीक है, ionic bonding, giant ionic lattice, exhibit a strong electrostatic attraction, strong electrostatic attraction, so more energy is needed to overcome such forces. सही है। उसके बाद आपके पास क्या है? PH3 कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वीक वैन वाल फोर्सेस होंगी, उनको ओवरकम करना इजी होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सही, यहाँ लिखते हैं
Compound S. Is the covalent bonding. It has a molecular structure. Due to weak van der Waals forces. Less energy is needed. सही है? Next, explain why compound R conducts electricity when molten because of the presence of free Y lines. Draw a dot and cross diagram for the molecule of compound S. Oh, compound S ये दिया हुआ है आपको और इसमें phosphorus है. Phosphorus group 5 का element है, which is why it has 5 valence electrons. Hydrogen contain only 1 valence electrons. So dot and cross diagram is going to be easy, extremely easy. How come? ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये hydrogen के electrons आ गए. और हम उस सर्कल वाली डायग्राम बना के दे सकते हैं ना, लेकिन अब हमने आपको ये भी सिखा दिए और हमने कहा दोनों में कोई फर्क नहीं होता और हमने साथ में ये भी कहा कि ये ज्यादा आसान होती है. सही है? An oxide of phosphorus has the molecular formula P4O10. Calculate the percentage by mass of phosphorus in this. बेटा सबसे पहला काम MR of P4O10 calculate कीजिए. यूजिएगा 31 into 4 plus 16 into 10. 280. 280 वही सही है. इसके बाद परसेंटेज बाय मास ऑफ फॉस्फोरस कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो फॉस्फोरस का मास कितना होता है 31. इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने एटम है फॉस्फोरस के 4, तो इनटू 4 करूंगा डिवाइडेड बाय mr व्हिच इज 284 इनटू 100. बताइए परसेंटेज कितनी आ रही है 43.7%. ठीक है. You done with the paper? अल्हम्दुलिल्लाह. 5 मिनट के बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे